Good morning, everyone. I hope you all can hear me clearly. Please write yes in the chat if you can hear me clearly. Great, thank you. Thank you for the confirmation. Piyush sir, good morning. I hope I'm clearly audible and visible. Hi, Dave here. I'll just set up my screen and we'll be good to go in a minute. Okay, sure, great. Morning, everyone. Welcome to yet another morning session. We'll start the session in the next 2 minutes. For the morning session, we have Mr. Dev Parekh sir with us. And we hope कि उनकी जो intraday profit streak है वो continue रहे. Last week we booked a good profit in the intraday trade. Let's hope कि इस बार भी Dev sir can give us similar trades. And also please note that this Thursday we have Chandan sir who will be taking a session, and Friday we have Shivangi ma'am who will be taking a session on decoding derivative. That will be happening this week. We can see your screen, sir. So for the people who are joining in for the first time, we'll start with the market outlook, index overview, quick update on the support and resistance. Then we'll move towards the stock queries and intraday trades. So this we are all set. You can turn on the camera and then we are good to go. Yeah. So yeah, I hope we are good to go. Yes, sir. Okay. So good morning, everyone. I'm Dev. Usually I used to be live on Tuesdays. Now, from last few weeks, I've been taking sessions on Wednesdays. So talking about the market outlook, currently Nifty around 0.30% on the positive side, Bank Nifty around 0.13% on the positive side, Sensex 0.30% on the positive side. So for now we have seen a good opening, but थोड़े समय से 20-30 पॉइंट का मोमेंटम है निफ्टी में, तो ज्यादा इतना नहीं नजर आ रहा है अभी, बट थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मिलना हमें लग रहा है इन कमिंग टाइम्स बिकॉज ऑफ द बजट एंड एवरीथिंग. And talking about India VIX around 2% से ऊपर, and few sectors में जो आपको बताऊंगा which will be in focus for today will be media and IT. मीडिया और IT पे हम फोकस कर सकते हैं, और मीडिया में there will be network 18, and for IT I would say for IT we'll be focusing on Tanla, or we'll be focusing on Zag. So for now IT and media will be in focus. Talking about the indices levels, then at 22,800, Nifty upside at 23,150, then at 23,333, Bank Nifty support at 48,600, while upside at 49,250, then at 49,500. Overall bias will be positive to mix. We cannot say completely positive, but slightly emphasizing on the positive side. So आपको भी पता है volatility काफी है, हमें काफी bias change होकर दिख रहे हैं पूरे दिन में. So I would not say positive for the whole day, but at least for now. And for the volatility, थोड़ा बहुत volatility हाई रहेगा. VIX भी आ गया अराउंड एग्जैक्ट मैं अगर आपको बताऊं 18.59 का VIX आ चुका है, 18.61 का VIX आ चुका है, which is almost 2.25% on the upside from yesterday's closing. So due to the high VIX and VIX शायद बढ़ते ही जाएगा यहाँ से because of the upcoming events which are going to come up. तो उस वजह से हमें जो मार्केट में volatility है वो बढ़ते हुए नजर आएगी, and bias पूरे दिन भर चेंज होते रहेंगे. So until and unless we finalize our stuff for the day, Anuj, we can move on for the queries. Sir, HDFC Bank swing trade. HDFC Bank swing trade.
देखिए स्विंग में अगर बात करें तो सपोर्ट हमारा बनेगा अराउंड एट 1610 एंड हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो रहेगा आपका 1705. ओवरऑल बायस फिलहाल के लिए स्विंग में शुड बी पॉजिटिव इफ द मार्केट सपोर्ट्स. Sir, Axis Bank. So then we have Union Bank, ICICI Bank. एक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का भी ओवरव्यू दे दीजिएगा सर. PSU banks we are quite positive on it. प्राइवेट बैंक्स की बात करें थोड़ा बहुत मिक्स्ड रहेगा एंड रेंज में रहेगा. ओवरऑल बायस ऑन द बैंकिंग सेक्टर वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन इट इफ द मार्केट सपोर्ट्स. देखिए अगर पूरा मार्केट नीचे आ रहा है सो अगर हमें ओवरऑल करेक्शन नजर आ रहा है तो उसमें बैंकिंग भी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, बट ओवरऑल बायस विल बी पॉजिटिव फॉर नाउ. Sir, Bank of Baroda quantity 1000 bought at 224. Bank of Baroda bought at 224. For now I would recommend आप होल्ड करिए. वैसे भी ₹2 नीचे ऑलमोस्ट ₹1 ही नीचे है. Advise you to hold for now. Your resistance will be at around 235 and your support will be at 210. Sir, your view on emphasis. एम्फेसिस अच्छा लग रहा है, स्विंग में अच्छा लग रहा है. रेजिस्टेंस फॉर नाउ विल बी 3050. स्मॉलर रेंज बता रहा हूं एंड योर सपोर्ट विल बी 2850. So prudent cop. वीक है सेटअप. आई वुड नॉट से इसमें मैं अभी फ्रेश एंट्री का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा. आप ऑलरेडी अगर होल्ड करके रखे हो सो आई वुड से एक 1600 के आसपास पे बाउंस बैक दिखना चाहिए, बट 1600 इज वे टू फार. अभी के लिए एग्जिट करना सही रहेगा. So National Aluminium bought at 193. बॉट एट 193. होल्ड करिए. मेटल में आपको मिल सकती है तेजी आने वाले समय में, और थोड़े समय पहले ही हमें कहा था मेटल सेक्टर में थोड़ा बहुत हमें अच्छा नजर आ रहा है आने वाला समय. सो आई वुड से कि आप होल्ड करना बेटर रहेगा. यहाँ से आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा विल बी 205 एंड देन एट 180. Sir, your view on Hudco. हुड को अच्छा लग रहा है फॉर स्विंग ट्रेड्स. एंड टॉकिंग अबाउट द बजट पॉइंट ऑफ व्यू, सो यूजुअली हमने देखा है कि बजट के समय पर जब हमें गवर्नमेंट थोड़ी बहुत ईज देता है फॉर डेवलप दूसरे सारी चीजों में, जहाँ पे बीच में आई गेस देयर वाज सम रूमर अबाउट गिविंग सम टैक्स एग्जेम्पशन टू दीस कंपनीज फॉर डेवलपमेंट पर्पस, बट आई डोंट नो अभी ऐसा कुछ रूमर तो नहीं है, बट वो टाइम पर मोमेंटम मिला था. सो यूजुअली बजट के समय पर ये सारे स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं और छोटा मोटा स्विंग आपको पॉजिटिव साइड पे मिल सकता है.
So please suggest what to pick from energy sector. Energy sector. Give me a moment. देखिए एनर्जी में अगर मैं बात करूं सीजी पावर अच्छा नजर आ रहा है सीजी पावर बीएचईएल एंड एनएचपीसी ये तीन स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हो फॉर एनर्जी So JSW Energy and Premier Energy, your view. जेएसडब्ल्यू एनर्जी फिलहाल के लिए वीक सेटअप है फ्रेश एंट्री की यहाँ पे मैं एडवाइस नहीं करूंगा एंड फॉर योर सपोर्ट विल बी 400 if you're already in and resistance for now will be 525. So Coal India 1000 at 430. Before we move forward, Anuj, we can initiate our trade for the day. We'll be initiating it in Eicher Motors. Current market price आप देख ही पा रहे हो. It is 5143.25. So let's catch it around 5143 for now. 5143 हमारा करंट मार्केट रेट होगा. टारगेट होगा हमारा 5220. एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा 5091.5. If you want, I can repeat it. 5143 current market price. Target 5220. Stop loss 5091.5. Yes, sir. We have taken a note of it. Sir, Federal Bank 1000 at 190. Give me a 140. देखिए अनुज बिफोर वी मूव फॉरवर्ड यहाँ पे हम एक ऑप्शन में भी ट्रेड रडार पे रखेंगे एंड अगर लगा तो हम एंटर करेंगे. Okay. So it will be for tomorrow's expiry, that is 30th Jan expiry. Currently at 150. मैं इसमें बता देता हूं. 30th Jan 49,500 call. I guess there's some network issue यहाँ पर. Hmm. 49,500 call.
देखिए इसका जो रेंज होगा ये पर्टिकुलर स्ट्राइक का अनुज, इट विल बी फ्रॉम 120 to 165 for now, and for a longer range it will be 110 to 200. So what is your target and stop loss? No, we are not initiating a trade, we are just giving a range for it. Okay, got it, sir. We can move forward till then. Sir, any budget strategy? देखिए बजट के दिन पे विक्स इतना हाई होगा कि फिलहाल के लिए अगर मैं आपको कहूँ ओवरनाइट पे बाय करके चलिए तो मतलब नहीं बनता। ऑन डे अगर आपको ज्यादा मोमेंटम पे ओपनिंग नहीं मिला है एंड यू फील इट इज वॉलेटाइल एंड विक्स ऑलरेडी हाई होगा, बट अगर विक्स थोड़ा बहुत फेवर में रहा तो हम बजट के मॉर्निंग पे स्ट्रैडल कर सकते हैं। लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड इज, अगर आपको याद होगा इलेक्शन का जो रिजल्ट था वहां पर निफ्टी ऑलमोस्ट गेव 700-800 पॉइंट्स का मोमेंटम इन फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स वी कैन से, और वहां पर एक्चुअली हम स्ट्रैडल नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ हाई विक्स। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, उस वजह से वी वर नॉट रिकमेंडिंग स्ट्रैडल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर जगह कह रहे थे कॉल पुट दोनों बाय करके चलिए आप, कुछ ना कुछ मोमेंटम तो मिल जाएगा, यू विल एंड अप इन प्रॉफिट, बट इट इज एक्चुअली नॉट सजेस्टेड बिकॉज जो हमारा विक्स होता है वो इतना हाई होता है कि जब रिजल्ट का डेट का आउटकम होता है, जो एक पर्टिकुलर आउटकम होता है जो इवेंट की वजह से विक्स हाई होता है, वो इवेंट जब आ जाता है फिर विक्स थोड़ा बहुत कूल डाउन होना शुरू होता है और फिर आपकी वॉलेटिलिटी है वो कम होती है और आपके जो प्रीमियम जो अननेसेसरीली बहुत हाई है वो अपने ओरिजिनल रेट पर वापस आना शुरू होते हैं। सो उस वजह से हम रेकमेंड नहीं करते स्ट्रैटेजी का ओवरनाइट एक दिन पहले लेकर जाना। rather than that you can do it in the morning itself, but it will be almost like a hero zero because अगर विक्स सेटल डाउन हुआ कूल डाउन हुआ तो आपके दोनों ही प्रीमियम्स नीचे आएंगे, बट हाँ अगर कुछ मेजर चेंजेस आए बजट में तो आपको वॉलेटिलिटी का फायदा मिल सकता है उसमें। So I would recommend it is better to do on that particular date rather than carrying it a day prior. So strategy for now will be wait for Saturday, wait for the budget, and उस दिन ही सुबह are we keeping a session, Anuj? We are keeping after the budget, post budget analysis. Oh, if it's possible एक morning session अगर आप रख दो around at 10-11, it will be better to give a strategy at that particular moment जहां पर अगर हमें नजर आ रहा है कि बजट पॉजिटिव साइड पर जा रहा है या फिर नेगेटिव साइड पर जा रहा है तो वही टाइम पर हम बेयरपुट या फिर बुल कॉल कर सकते हैं, बट अ डे प्रायर आई वुड नॉट रेकमेंड। Got it, sir. Sir, your view on CDSL? सीडीएसएल ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। कैपिटल मार्केट के हर स्टॉक्स हमें अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव लग रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम एक दो स्टॉक्स जो कि थोड़ा बहुत होता है, ये हर सेक्टर में फ्यू स्टॉक्स आर ऑन द नेगेटिव साइड, बट ओवरऑल जो हमारा कैपिटल मार्केट रहेगा वो क्वाइट पॉजिटिव है। सीडीएसएल उसी में का एक, और वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन सीडीएसएल एज वेल। Sir, Maruti bought at 8600. मारुति क्वाइट पॉजिटिव, ऑलरेडी हम उस पे देख रहे हैं उसके जो इंटरनल अपडेट्स भी है। एज यू नो उन्होंने अभी ईवी सेगमेंट में भी एंटर करा है। प्रीवियसली दे वर फॉर हाइब्रिड कार्स, नाउ दे आर लॉन्चिंग देयर ग्रैंड विटारा ईवी, एंड उसमें उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया है फॉर द प्रोडक्शन। एंड ओवरऑल जो फिलहाल के लिए चार्ट वाइज भी अगर मैं आपको बोलूं तो काफी पॉजिटिव है एंड ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। सो वी आर ऑल्सो ट्रैकिंग इसका स्टॉक ऑप्शन भी, जस्ट आपको बता दूं कि हम इसका स्टॉक ऑप्शन ट्रैक कर रहे हैं, दैट इज 12,100 कॉल 27 Feb। वी आर ट्रैकिंग इट बट नो ट्रेड्स फॉर नाउ। This is Zomato.
जोमेटो ने थोड़ा सा करेक्शन दिया है, बट येट अगेन आप देख पा रहे हो 2.5% ऑन दी पॉजिटिव साइड है आज. सो बाउंस नजर आ रहा है, यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो अगर एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज है तो, एंड थोड़ा बहुत एड ऑन भी कर सकते हो इफ यू वांट टू. बट अग्रेसिव बाइंग अभी फिलहाल मैं इस पर रेकमेंड नहीं करूंगा. सॉरी. Sir, Airtel bought at 1715. 715. देखिए ओवरऑल पॉजिटिव ही है इन कमिंग टाइम्स फॉर लॉन्ग टर्म व्यू. स्विंग में थोड़ा बहुत मार खा रहा है, बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की बात नहीं. आप देख ही पा रहे हो, आपके सामने ही चार्ट है. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट. सो अभी होल्ड कर सकते हैं. Sir, HCC bought at 55.48. नहीं, क्या कहा आपने? HCC. Am I typing right? HCC. Yes, sir. और बाइंग क्या बोला आपने? Bought at 55.48. हाँ, मैंने वही कहा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया. Sorry, my mistake. देखिए अभी के लिए मैं फ्रेश बाइंग रेकमेंड. Yeah, you said you bought at 55. Yes. मैं तो कहूंगा आप काफी नीचे हो ऑलरेडी, और इतना होल्ड किया है तो एक 28 के सपोर्ट से आप इसको और होल्ड कर सकते हो इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू टू. ऑलरेडी आपने इतना मार्जिन लूज कर दिया है, बट 28 का फिलहाल सपोर्ट बनेगा और थोड़ा सा बाउंस नजर आ रहा है. सो आई वुड से 28 के सपोर्ट से आप इसको होल्ड कर सकते हो, बट अगेन इफ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज यू टू. Sir, your view on realty sector? Reality. Dev sir, your view on home first? मैं रियलिटी बता देता हूँ आपको पहले. देखिए रियलिटी ओवरऑल पॉजिटिव नजर आ रहा है, स्पेशली अनंत राज. वी हैव आवर इन्वेस्टमेंट आइडिया ऑन अनंत राज. इन्वेस्टमेंट आइडिया हमने आई गेस थोड़े समय पहले इनिशिएट किया है. सो यस, वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन द रियलिटी साइड. अनंत राज हाँ, मैं कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था? Am I audible and visible? Chat. Yes, thank you. So 3 शेयर्स बता रहा था, राइट? सो 3 शेयर्स रहेंगे. एक तो अनंत राज होगा, दूसरा इट विल बी गोदरेज प्रॉपर्टीज, एंड तीसरा होगा ओबरॉय रियल्टी. अनंत राज पे वी आर क्वाइट पॉजिटिव एज ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया उस पे इनिशिएट कर दिया है. सो रियल्टी ओवरऑल गुड. होम फर्स्ट पे चलते हैं. आई गेस अनुज ने होम फर्स्ट पूछा था. Yes, sir. होम फर्स्ट ओवरऑल थोड़ा बहुत प्रेशर में. इफ यू आर बाइंग, इफ यू आर लुकिंग टू बाय फ्रेश, आई वुड से 800 850 के आसपास बाय करिए. अभी के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड एंटरिंग इन इट. So we'll take 2 more queries. Manappuram Finance. Manappuram Finance. स्ट्रॉन्ग है अभी फिलहाल. सेटअप ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, काफी अच्छा लग रहा है.
220 का resistance and support at 180. And sir, the last would be Federal Bank. 1000 at 190. ठीक है, अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस विल बी एट अराउंड 175 and the support will be at around 175, resistance will be around at 195 200. So यही रेंज है अभी के लिए. ओवरऑल बायस विल बी नेगेटिव फॉर नाउ. सो अगर आप चाहो तो अभी के लिए एग्जिट कर सकते हो. आगे बेटर प्राइस पे आप री एंटर कर सकते हो या कैन लुक फॉर सम अदर स्टॉक. So guys, that will be all for the morning session. Thank you everyone for joining in. Thank you Dave sir, and we'll update you about the space on Stockholm. अगर आपकी queries अभी आंसर नहीं हुई है तो feel free to drop them on Stockholm. We'll be happy to answer. Thank you everyone.